Hello student, I am Dr. A.S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Range of Thallus in Phaeophyta, that is brown algae. Contents: definition of thallus, types of thallus in Phaeophyta, figures of Phaeophyta thallus. So this is the content that we are going to learn. First of all, let us know what is thallus. So here is a simplified definition of thallus. Thallus is defined as a plant body lacking true root, stem, leaves, flowers and fruits. यहाँ पे थैलस जो होता है ये प्लांट बॉडी है. थैलस उसे कहते हैं, वो इस प्रकार की प्लांट बॉडी होती है जिसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते हैं. तो इस प्रकार की जो प्लांट बॉडी है उसे थैलस कहा जाता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थैलस. इन अदर वर्ड्स, यू मे डिफाइन दिस थैलस like this: an undifferentiated plant body lacking vasculature. इस प्रकार की प्लांट बॉडी जिसके अंदर डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं होता है, उसकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जो होती है वो सिमिलर ही सेल्स से बनती है और उसमें वैस्कुलेचर नहीं होता है. इज़न्ट इट? वैस्कुलेचर न कि जाइलम फ्लोएम, ये हायर प्लांट में पाया जाता है. सो देयरफॉर thallus is a very simple plant body, especially algae, isn't it? That is, we call it a lower plants. So thallus is found in lower plants. So this is the definition of thallus. Now, types of thallus in Phaeophyta, isn't it? In brown algae, what kind of different thallus occur? So these are different thallus. Filamentous thallus, this is a common type of thallus which is found in Phaeophyta. But this filamentous thallus is evolved into heterotrichous kind of thallus, isn't it? There is filament, but the filament is heterotrichous. That is, the filament show two kinds of modes of development. That is called heterotrichous thallus. It is found in ectocarpus. So ectocarpus is an example of Phaeophyta or brown algae. तो इसके अंदर ये filamentous thallus पाया जाता है और heterotrichi ये यहाँ पे पाई जाती है. This heterotrichous nature of thallus is evolved kind of thallus. Another type of thallus is foliaceous, means leaf like. foliaceous का मतलब होता है लीफ के जैसा थैलस. जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर लीफी नेचर होता है. फॉर दैट रीजन इट इज़ कॉल्ड foliaceous thallus. And this foliaceous thallus are of two types, that is parenchymatous and pseudo-parenchymatous, isn't it? So you know parenchyma cells, these are the cells with a definite size and shape with intercellular spaces. Pseudo-parenchymatous kind of cells are somewhat elongated parenchyma like cells, and they form a kind of elongated cells. So that is called pseudo-parenchymatous kind of thallus. Now here is the figure of ectocarpus, and this is the example of heterotrichi. So here you can see this is the plant body thallus. This is the erect system and this is a prostrate system. So here you can see this is erect system and here is prostate system.
So here you can see these filaments. Some filaments are growing upward away from the soil, and some filaments are going towards the soil, isn't it? So it is called prostrate system, and this is erect system. So filaments are of two types, therefore it is called heterotrichous kind of thallus. This is the example of foliaceous kind of thallus. So you can see leaf-like branches are there. The thallus show leaf-like branches, and it is called blade, isn't it? Here you will find that this is a float or air vesicle. This is type, and at the base you will find a rhizard like structure that is called holdfast. So this is example of foliaceous type of thallus. Foliaceous का मतलब होता है लीफ लाइक. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो थैलस है उसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं foliaceous type of thallus. So in this way you will find that in phaeophyta primarily these two types of thallus are found. Now you can see here leaf-like structures. It is called lamina or frond. So therefore it is foliaceous thallus. So this is an example of laminaria digitata. This is a brown algae. तो ये ब्राउन algae का एग्जाम्पल है. तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पत्तों के जैसा इसका ब्रांचिंग यहाँ पे नज़र आता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं foliaceous type of thallus. So this is laminaria. So another photograph is there. So you can see brown color is there, isn't it? Due to prominent fucoxanthin pigment, brown coloration is there. And you can see leaf-like branching, that is leaf-like structures. So therefore this is called foliaceous type of thallus. So example of brown algae, that is laminaria digitata. Then pseudo-parenchyma type of thallus. So here you can see Marionema. This is also brown algae. So here you can see the parenchyma cells are elongated. So here you can see this elongated parenchyma cells and they are entangled. ये parenchyma जो है pseudo-parenchyma है, ये इस प्रकार से ये बढ़ता है, it becomes elongated cells, इसलिए इसको कहते हैं pseudo-parenchyma, isn't it? ये पूरा जो है तो फिलामेंट लाइक ये सेल बन गए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं pseudo-parenchymatous cell, and it is found in Marionema. Okay, this is also brown algae. Another example is Lithaceae. This is also brown algae. Here you will find that the thallus consists of elongated cells and it is called pseudo-parenchyma. So pseudo-parenchymatous cells are there, isn't it? So this is example of pseudo-parenchymatous thallus where you will find parenchyma cells are elongated and hence it is called pseudo-parenchymatous thallus. Example is Lithaceae and this is Marionema. Okay. So in this way you will find that foliaceous thallus and pseudo-parenchymatous thallus, parenchymatous thallus and pseudo-parenchymatous thallus, foliaceous thallus. अभी यहाँ पे जो हमने फिगर देखी थी ये parenchymatous thallus की है. अभी यहाँ पे ये जो लैमिनारिया है इसके अंदर पैरेन्काइमा होता है, बहुत सारा पैरेन्काइमा होता है. यहाँ पे pseudo-parenchyma से ये बनता नहीं है, ये parenchyma से बनता है. So it is foliaceous and parenchymatous, isn't it? This is the and this is pseudo-parenchymatous, isn't it? Foliaceous ही है लेकिन parenchyma and
Pseudo-parenchyma, ये उसके अंदर फ़र्क है. So this is Pseudo-parenchymatous thallus. Again, this is the example of another algae, that is Macrocystis pyrifera. It is called giant kelp. ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं giant kelp. ये ब्राउन algae के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है kelp, जो बहुत बड़ा होता है. Macrocystis pyrifera. So you can see here this leaf-like branching, and it is called lamina or frond or blade, and this is stipe and this is holdfast, isn't it? So this is an example of foliaceous type of thallus. Another example is Nereocystis leukemia. This is called bladder kelp. इसको कहते हैं ब्लैडर kelp. ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, इसलिए ये इसके अंदर गैस होता है, एंड इट एक्ट्स एज ए फ्लोट, एंड दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फोलाशियस थैलस. इसलिए इसको कहते हैं फोलाशियस, क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है लैमिना, बट दीज आर नॉट ट्रू लीव्स, इजंट इट. तो इसको कहते हैं लैमिना, फ्रॉन्ड, और ये होता है स्टाइप, और नीचे होल्ड फास्ट. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ foliaceous type of thallus. So here you can see this is a coconut type of algae, brown algae, Postalacia palmiformis. Postalacia palmiformis. It is called sea palm, isn't it? Name is given. आप नाम से ही आपको समझेगा कि इसको सी पाम कहा जाता है, समंदर में बढ़ने वाला नारियल जैसा पौधा. ओके, so algae, this is algae. Again you will find that leaf like structures, but these are not true leaves, pseudo leaves you can say, isn't it? Lamina, this is stipe, and this is holdfast. So this is another example. So here you can see another species of laminaria saccharina, devil's apron इसको कहते हैं. So here again you will find that leaf like blade, पत्ते के जैसा दिखने वाला इसको कहते हैं blade. उसके नीचे stipe और नीचे holdfast. So this is the arrangement of laminaria, isn't it? Typical है, leaf like structure, उसके बाद में ये stipe और उसके नीचे ये holdfast. So this is the speciality of phaeophyta, isn't it? Leaf like structure, foliaceous thallus. And this is an example of heterotrichous type of thallus, that is ectocarpus. So here you can see again heterotrichy. You can see some filaments are growing prostrate parallel to the soil, and some filaments are growing away from the soil. So this is the erect system and this is the prostrate system, isn't it? So here you can see ये prostrate system है, ये ऊपर बढ़ने वाला erect system है, और projecting system बोलते हैं इसको, projecting system. तो इस प्रकार से you will find that in ectocarpus heterotrichy is there. filament है, लेकिन this filament कैसा है, heterotrichous है. So here you can see this is prostrate system, और ये ऊपर वाला जो बढ़ने वाला तो erect system बोलते हैं इसको. So this arrangement is called heterotrichy. Okay, so in this way you will find that this range of thallus, तो बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन बेसिकली उसको हम इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिलामेंटस एंड फोलाशियस, और फोलाशियस के अंदर फिर पैरेन्काइमेटस एंड स्यूडोपैरेन्काइमेटस, इस प्रकार से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम. So these are the examples of different types of thallus in phaeophyta. So these algae grow, and its dimensions are very large. बहुत बड़ा होता है ये algae. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है sargassum natans. This is also brown algae. So here you can see this thallus, isn't it?
नाउ हियर यू कैन सी दिस इज सेंट्रल एक्सिस, ये जो है बीच वाला दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। ये बलून लाइक स्मॉल वेसिकल्स नज़र आते हैं, एयर ब्लैडर, इसके अंदर गैस होती हैं, दे हेल्प टू फ्लोट द ब्रांचिंग, isn't it? The plant can float erect in the water body. So this is air bladder and this is lamina, isn't it? पत्ते के जैसा जो दिख रहा है आपको, isn't it? This is called lamina, frond, और you may call it leaf, इसको लीफ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू लीफ, और इसको सेकेंडरी लैटरल भी कहते हैं। देखो इतने नाम है इसको, लैमिना, फ्रॉन्ड, लीफ, सेकेंडरी लैटरल, isn't it? तो इतने ये सारे सेकेंडरी लैटरल्स है ये पूरे, isn't it? So this is the example of brown algae called sargassum natans, isn't it? So you can see brown color is there due to presence of fucoxanthin. So this is another example, and the same figure of sargassum is in different angle, somewhat enlarged. So you can see again here, this is central axis, isn't it? This is central axis, air bladder, this is air bladder, then lamina or leaf, it is also called secondary lateral और फ्रॉन्ड, जैसा मैंने ऊपर बताया, और ये सेंट्रल एक्सिस से एक ब्रांच निकलती है, उसको प्राइमरी लैटरल कहते हैं, और ये जो पत्ता दिख रहा है इसको सेकेंडरी लैटरल बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी द प्राइमरी लैटरल, isn't it? दिस वन इज़ प्राइमरी लैटरल, और ये जो पत्ता है इसको ही हम सेकेंडरी लैटरल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी लैटरल, और फ्रॉन्ड और लैमिना, दो तीन इसको नाम है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। सो दिस इज सारगैसम, बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गी है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज़ अनदर ब्राउन एल्गी, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आता है, isn't it? लेकिन एक्चुअली इट इज़ ब्राउन एल्गी, isn't it? तो एक क्लोरोफिल का मात्रा थोड़ी सी एक स्टेज में ज़्यादा होती है, बाद में धीरे धीरे उसके अंदर फ्यूकोजेंथिन बढ़ते चले जाता है, फिर वो ब्राउनिश बन जाता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ ब्राउन एल्गी कॉल्ड फ्यूकस वेसिकुलस, फ्यूकस वेसिकुलसस। तो ये है फ्यूकस वेसिकुलसस जो होता है, तो इसके अंदर यू कैन सी दिस आर द एयर ब्लैडर्स, दिस इज द एयर ब्लैडर filled with gas, isn't it, and helped as a float. So this is called frond, लीफ के जैसा ही है, इसलिए इसको फोलाशियस कहा जाता है। इट अपीयर लाइक ए लीफ लाइक, isn't it? For that reason it is called foliaceous thallus. So this is another example of foliaceous thallus. Again another example, Macrocystis pyrifera, giant kelp. So you can see this figure and this is photograph, isn't it? इस प्रकार की इसकी अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे ये एयर ब्लैडर्स है और ये ब्लेड है जिसे हम लैमिना कहते हैं या सेकेंडरी लैटरल भी कहते हैं, isn't it? And this is actual photograph. So here you can see air bladder, this is lamina with the serrate margin, isn't it? Air bladder. So this is the ब्राउन एल्गी। ये बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है इसका थैलस। तो यू कैन सी हियर दिस इज पाम सीवीड, देखो पाम के जैसे ही नज़र आ रहा है ये, पोस्टेलेशिया पामीफॉर्मिस उसका नाम ही है, पोस्टेलेशिया पामीफॉर्मिस। सो हियर यू कैन सी दिस इज फ्रॉन्ड, है ना, यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ and this is type, this is hold fast. So it appears like a coconut tree, isn't it? So Posterecia formis, a very nice brown colored algae. Then you can see the sargassum on Caribbean seashore,
समुद्र के किनारे पे देखो कितना sargassum निकाला है, ये पूरा समुद्र से निकाल करके किनारे पे रखा हुआ है। तो यू कैन सी हाउ मच दिस algae इज़ ग्रोइंग इन द सी। तो समुद्र में इतनी वो algae बढ़ जाती हैं कि बहुत सारा समुद्र का जो हिस्सा है वो इससे घिरा हुआ रहता है। तो ऐसा जो समुद्र होता है जिसके अंदर बहुत सारा सार्गैसम बढ़ता है तो उसको सार्गैसो सी भी बोलते हैं। तो ऐसे सार्गैसो सी के अंदर से ये पूरा सार्गैसम निकाल करके यहाँ पे लाया गया है। एंड दिस सार्गैसम कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, isn't it? It can be used as food, it can be used as fodder, in industry, in confectionery, isn't it? So there are many uses of brown algae. So you can see here sargassum on the Caribbean seashore, समुद्र किनारे ये इस प्रकार से दिखता है। Now here you can see a man with brown algae, Macrocystis pyrifera। कितना बड़ा algae है देखो, giant kelp इसको कहते हैं ना, इतना है देखो। So you can see this what is the dimension of this brown algae, इतना बड़ा होता है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, ब्राउन कलर, is it? Macrocystis pyrifera. So in this way you will find that the quantity you can see here, you can see here this quantity of this algae कितना बढ़ रहा है ये समुद्र के अंदर। तो इस प्रकार से इसको इकट्ठा किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। So in this way you will find that this is the brown algae. So hope you understood this presentation, that is thallus in phaeophyta. Okay, so thank you very much. You have to study this presentation and prepare your own notes. Thank you.